Good morning, students. Welcome to your maths class. I hope you all are good. So, students, in last class we have started with the exercise 16.1, and from that exercise we have solved the question number 1, which was based on the पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डाटा। ये जो कल के क्लास में हमने एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जो पिक्टोग्राफ के ऊपर बेस्ड था। ओके, एंड नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, एंड दीज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डाटा। सो आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 16.1 के, जो बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बार ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करी है, बार्स के जरिए रिप्रेजेंट करी है, तो उनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एंड इट इज़ वेरी ईजी to understand these bar graphs and to solve the questions based on these bar graphs is also very easy. Okay, just pay attention. Question number 2 from the exercise 16.1. The graph shows the number of family members of 5 families. Answer the following questions. Okay, so there is the bar graph representation of the number of family members of 5 families. So ये जो बार ग्राफ है ये कौन सा इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, जो 5 फैमिलीज दिए है उसके नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स का डाटा या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है बार ग्राफ के जरिए। ओके, सो द टाइटल ऑफ दिस बार ग्राफ इज फैमिली साइज। सो इन दिस बार ग्राफ पहले देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। ओके, सो इन दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑन द एक्स एक्सिस दे हैव गिवन द नेम्स ऑफ फैमिली, नीता, प्रेम, रंजन, कृष्णा and Samir. These are the names of the families. And on the y-axis, vertical axis पे क्या है? Number of persons या number of members in that family. ये जो y-axis है ये represent कर रहा है number of family members in this family. ये जो 5 families है, नीता, प्रेम, रंजन, कृष्णा और समीर, इन 5 families में कितने members है, हर एक family में कितने members है उसका बार रिप्रेजेंटेशन करा है, और y एक्सिस पे नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स दिया है। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर्स दिए। दीज आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन दिस फैमिलीज। ओके, सो पहले क्वेश्चन रीड करो। हाउ मेनी पर्सन्स आर इन रंजन्स फैमिली? So in this question we have to write the number of family members in the Ranjan's family. So पहले तो आपको बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में रंजन फैमिली का कहाँ है बार वो ढूंढना है। दिस इज नीताज फैमिली बार ग्राफ, दिस इज प्रेम्स फैमिली बार, दिस इज रंजन्स फैमिली बार। ओके, रंजन का फैमिली बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो रंजन का फैमिली बार दिखाई दे रहा है, वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है? वाई एक्सिस को टच कर रहा है नंबर 4 पे। वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है? नंबर 4 पे। दैट मीन्स नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन द रंजन्स फैमिली विल बी इक्वल टू 4। ओके, so you have to write answers like this. Question number 2, subpart A. Number of family members in Ranjan's family इक्वल टू 4। रंजन की फैमिली में कितने मेंबर्स है? 4 मेंबर्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन बी।
क्वेश्चन बी रीड करो. whose family has maximum members. मतलब किसके फैमिली में सबसे ज़्यादा मेंबर्स है या सबसे ज़्यादा सदस्य किसके फैमिली में है. सो you can see all these bars. This is the bar of Neeta's family. This is the bar of Prem's family. This is the bar of Ranjan's family. This is the bar of Krishna's family. And this is the bar of Samir's family. So out of all these bars, which bar is longest? कौन सा bar सबसे long या tall है? This bar is longest. That means Krishna. ये किसका bar है? किसकी family का bar है ये? कृष्णा के फैमिली का. इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कृष्णाज फैमिली. एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कृष्णाज फैमिली? इट इज टचिंग ओवर हियर ऑन द वाई एक्सिस. ये जो बार है वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है? नंबर 6 के आगे टच कर रहा है. दैट मीन्स दिस इज the number of members in Krishna's family is equal to 6. So whose family has maximum members? Krishna's family has maximum members. सबसे ज़्यादा सदस्य किसके फैमिली में है? कृष्णा की फैमिली में. तो लिखो कृष्णा family has maximum members. Okay. In this way we have got the answer for question B. Now we will move on to the next question. Question C. How many members are more in Prem's family than Samir's family? How many members are more in Prem's family than Samir's family? That means we have to find the difference between number of members इन प्रेम्स फैमिली एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन समीर्स फैमिली. यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि प्रेम की फैमिली में कितने सदस्य ज़्यादा है समीर के फैमिली से. दैट मीन्स हमें प्रेम की फैमिली में समीर के फैमिली से कितने सदस्य ज़्यादा है ये फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. और किसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा? नंबर ऑफ प्रेम्स फैमिली मेंबर minus number of Samir's family member will give you the difference, and that difference is nothing but the number of family members more in the Prem's family than the Samir's family. तो पहले तो find out करो number of family members in the Prem family. प्रेम की फैमिली का बार कहाँ पे है? This is the bar of the Prem's family. तो प्रेम की फैमिली में कितने members है? It is touching to the number 5 on the y-axis. That means number of family members in the Prem's family is equal to 5. Now number of family members in the Samir's family. Where is the bar of Samir's family? समीर का फैमिली बार यहाँ पे है. That means number of family members in Samir's family is, समीर का जो बार है वो कहाँ पे टच कर रहा है y-axis को? It is touching to the number 2. That means number of family members in Samir's family is equal to 2. And now we have to subtract this 2 from 5. Then we can get the difference between number of Prem's family member and number of Samir's family member. See, number of members in Prem's family is equal to how much? 5. Next, number of members मतलब सदस्य in Samir's family. दूसरी कौन था? Samir's family. How much it is? It is equal to 2. Now difference between number of members in Prem's family and Samir's family. It is equal to number of family members in Prem's family 5 and number of family members in Samir's family is equal to 2. 5 minus 2, the answer will be equal to 3.
है ना. So this 3 is nothing but your answer of the question C. How many members are more in Prem's family than Samir's family? So आपको आंसर लिखना है. Prem's family has has 3 members more than Samir's family. Okay, this is the answer of that question. So in this way we have completed with the question number 2. Now we will move on to the last question of this exercise, question number 5. And I want you to solve question number 3 and 4 on your own. मैं question number 2 और 5 solve करके दे रही हूँ. बचे 2 questions 3 और 4 आपको अपने मन से solve करने हैं. So question number 5. Each student of class 4 was asked to borrow a book from the library, which is depicted in the bar graph. Answer the following questions. Okay. So here they have represented the number of books borrowed by the students in the way of bar graph representation. Okay. And from that we have to answer the following questions. So यहाँ पे जो ये बार ग्राफ दिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल और फ्रॉम द स्कूल्स लाइब्रेरी. जो बच्चे हैं स्कूल के, उन्होंने स्कूल के लाइब्रेरी से कौन से बुक इशू करे हैं या कौन से बुक पढ़ने के लिए अपने पास लिए हैं, बोरो करे हैं, उनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है बार ग्राफ के ज़रिए. उसके ज़रिए हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो पहले तो ये बार ग्राफ अच्छे से रीड कर लो. सो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस बार ग्राफ? बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी. यानी लाइब्रेरी से कौन से बुक दिए गए हैं बच्चों को, उसके बारे में ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ के एक्स एक्सिस पे क्या क्या है? एक्स एक्सिस पे है नेम ऑफ द बुक. देखो, स्टोरी, मैगजीन, नॉवल, games, computer, puzzles, these all are the types of the books, the name of the books. स्टोरी के बुक्स कितने हैं, मैगजीन्स कितनी है बोरो की गई, नॉवेल्स कितनी बोरो करी गई है स्टूडेंट्स को, गेम्स की बुक्स कितने बोरो करी गई है स्टूडेंट्स को, फिर कंप्यूटर की बुक्स कितने बोरो करे हैं स्टूडेंट्स को, पजल्स कितने बोरो किए गए हैं, पजल वाली बुक्स कितनी बोरो की गई है बच्चों को. ये सारा यहाँ से पता चल रहा है. और दिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बुक्स. वाई एक्सिस से क्या पता चल रहा है? नंबर ऑफ बुक्स. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सारे नंबर्स किसके नंबर्स है? नंबर ऑफ बुक्स. ओके, सो स्टार्ट answering the questions. How many story books were borrowed? How many story books were borrowed मतलब स्टोरी बुक्स कितनी लाइब्रेरी से दी गई है बच्चों को. तो स्टोरी बुक्स का बार कहाँ पे है? दिस इज द बार ऑफ द स्टोरी बुक्स. सो स्टोरी बुक का बार वाई एक्सिस पे को कहाँ पे टच कर रहा है? वाई एक्सिस को टच कर रहा है नंबर 10 के पास. कहाँ पे टच कर रहा है? 10. दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स बोरोड विल बी इक्वल टू 10. सो आंसर में लिखो क्वेश्चन ए के नंबर ऑफ स्टोरी books borrowed is equal to 10. Okay, next question B. Which type of book is most popular? Which type of book is most popular? That means that book is the number of that book borrowed is maximum. Okay, ये जो बुक है that is been borrowed maximum. The book which is popular that is been borrowed maximum. तो सबसे लंबा ग्राफ किसका है? बार सबसे लंबा बार है इस वाले बुक का. दिस बुक
दिस बार बिलोंग्स टू द गेम्स। ये बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे लंबा सबसे ऊंचा जो बार है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द बुक्स बोरोड ऑफ गेम्स। यस, दैट मीन्स गेम्स बुक्स आर मोस्ट पॉपुलर। क्वेश्चन बी का आंसर है गेम्स बुक्स आर मोस्ट पॉपुलर। पॉपुलर है तभी तो सबसे ज़्यादा बोरो कर रहे हैं बच्चे उस बुक को, है ना। सी, क्वेश्चन सी, विच टाइप ऑफ बुक इज़ लिस्ट पॉपुलर? विच टाइप ऑफ बुक इज़ लिस्ट पॉपुलर मतलब कौन सा ऐसा बुक है जो सबसे कम पसंद किया जा रहा है, जो सबसे कम बोरो किया जा रहा है, उसका नाम लिखना है। या ऐसा कौन सा बुक है जो लाइब्रेरी से सबसे कम बच्चों ने इशू करा है। ओके, सो क्वेश्चन सी। सो सबसे छोटा ग्राफ किसका है? बार किसका है सबसे छोटा? द स्मॉलेस्ट ग्राफ, बार ग्राफ इज ऑफ दिस बुक। ये कौन सा बुक है? नॉवल। नॉवल जो है उसका बार सबसे छोटा है। ओके, दैट मीन्स दिस बुक इज लिस्ट पॉपुलर। नॉवल इज लिस्ट पॉपुलर बुक। ओके, next D question. How many students are in the class? How many students are in the class? You can find the number of students from the number of books borrowed. क्योंकि हर एक बच्चे ने कोई ना कोई बुक बोरो की है, तो जितनी बुक्स बोरो की है उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। बिकॉज हियर ऑल द स्टूडेंट्स हैव बोरोड any one kind of a book, and number of books borrowed is nothing but number of students in that class। क्योंकि इस क्लास के सभी बच्चों ने लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करी है, तो जितने बुक्स बोरो करी है, जितने बुक्स बच्चों ने ली है, उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। नाउ हाउ विल यू फाइंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड? टू फाइंड the total number of books borrowed, what we have to do? We have to add together the number of story books, number of magazine books, number of novels, number of games book, number of computer books plus number of puzzle books। ये जो हर एक टाइप का बुक है, स्टोरी, मैगजीन, नॉवेल, गेम्स, कंप्यूटर, पजल, इन सब को अगर हम एक साथ ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, एंड दैट टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। So question D, how many students are in the class? Write down number of students is equal to total number of books borrowed. Okay, now total number of books borrowed will be books borrowed is equal to number of story books plus number of novels plus number of magazine okay plus number of games plus number of computer plus number of puzzle। Okay, so how many number of story books are there? 10. How many number of magazines are there? It is also equal to 10. How many numbers of novel is there? नॉवेल का बार कहाँ पे टच कर रहा है? 5 को टच कर रहा है। गेम्स का बार कहाँ पे टच कर रहा है? 25 को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। कंप्यूटर का इट इज़ टचिंग टू द नंबर 15,
and puzzles ka it is touching to the number 20 on the y-axis. That means number of story books is 10, number of magazines is 10, number of novels is 10, number of games is 25, number of computer books is 15, and number of puzzle books is 20. These are the number of books borrowed. Okay, so write down 10 plus 10 plus 5 plus 25 plus 15 plus 20. After adding them together, what will be the total? Start counting. 10 plus 10, it is 20. 20 plus 5, it is equal to 25. 25 plus 25, it is equal to 50. 50 plus 15, it is equal to 50 plus 15, 65. 65 plus 20, it is equal to 85. So number of books borrowed is equal to 85. That means number of students is equal to 85. So number of students in class is equal to 85. Okay. Now next question number D हो गया support. Now last question, support E. How many more students borrowed games book than the puzzle books? How many more students borrowed games book than the puzzle book? That means we have to find the difference between number of games book and number of puzzles book. Number of games book is equal to how many games book are there? देखो गेम्स का बार कहाँ पे है, यहाँ पे, and it is touching to the y-axis on the number 25. That means 25 is the number of games book. Next, number of puzzles book. कितने हैं puzzles book borrow किए गए? Puzzle का बार यहाँ पे है. It is touching to the axis, y-axis at number 20. That means number of puzzle book borrowed is equal to 20. Now difference find out करो दोनों के बीच का. Difference between number of games book and puzzles book. It is equal to 25 minus 20. That is equal to 5. So this difference is nothing but 5 students borrowed games book more than the puzzle books. Okay, 5 students borrowed games book more than puzzles book. Okay, so in this way we have completed with the exercise 16.1, and this chapter has only one exercise, and I want you to solve the question number 3 and 4 from the exercise 16.1 on your own. If you have any doubt or queries while solving these questions, you can ask me. Till then, thank you. Have a nice day.